बैचलर इन फाइनेंस जर्मनी में कैसे करें। हे गाइस, मेरा नाम है अंकित सखोजा और मैं बनाता हूँ वीडियोस रिगार्डिंग लाइफ स्टडी एंड वर्क अब्रॉड। आज के वीडियो में मेरे साथ है आगम जो कि कर रहे हैं स्टूडेंट कोलीग फ्रॉम फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो लेट्स वेलकम आगम। वेलकम टू माय चैनल अंकित इन जर्मनी। कैसे चल रहा है? That's great. Germany is going through a difficult weather right now compared to where I come from, but more or less it's rainy, it's windy, it's cold. I'm fun right now. So अभी आप जर्मनी में क्या कर रहे हो? So फिलहाल तो I'm doing my student colleague, what we in Frankfurt School of Finance and Management called it pre-university foundation program. So like most of you know or might not know, in Germany there is 13 years of high school education, one more year than what we have in India. So you have to come here, आपको इधर आना है, 1 साल कंप्लीट करना है, आप अलग अलग टाइप के स्टूडेंट को लीड कर सकते हो. I personally chose Frankfurt School because it's in the heart of Frankfurt, the financial center, and the structure was pretty much nice, and I like the school in general as well. So that's what I'm doing I right. think it's a good university ranking भी बहुत अच्छा। It's one of the most elite business schools, like not just because I'm studying in the school, but it is triple crowned. Only 1% universities around the world get that. So yeah, it has its own perks as well. तो जैसा आपने कहा कि आप ब्रिजिंग के लिए कोर्स स्टूडेंट के लिए कर रहे हो, तो इसका प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का? So it's as similar as applying to any university course, bachelor's, master's. आपको directly Frankfurt School के website पे जाना है. See, initially what Frankfurt School recommends you, I haven't applied to any other student colleague, but I will personally guide you for Frankfurt School, is that you can you apply for bachelor's, and if they don't think that you're eligible for a direct entry to the German education system, मतलब अगर आपका high school diploma सही नहीं है, आप marks नहीं लाते हो इतना, या फिर आप उनकी भी एक अलग एंट्रेंस टेस्ट होती है फ्रैंकफर्ट स्कूल की, जस्ट टू गेट इन फ्रैंकफर्ट स्कूल. सो अगर आप इफ यू डोंट पास दैट, सी देयर आर ईदर ऑफ द थ्री क्राइटेरियाज. अगर आपका इंडियन हाई स्कूल डिप्लोमा है, जैसे हमारा मैं एचएससी में था, मुंबई से हूँ मैं, एचएससी में था, आईसीएससी हो गया, सीबीएसई हो गया, तो ना आपको एग्जाम देने देंगे ना आपका कुछ होगा. यू डायरेक्टली हैव टू गो थ्रू स्टूडेंट को. क्योंकि मेरा से नहीं होता, बिकॉज आई डिडंट गिव मी द एडमिशन टेस्ट. उनका डायरेक्ट ईमेल आया मुझे कि आप दे सकते हो और आप स्टूडेंट को लीड में आ जाओ. सो उतना ही प्रोसीजर होता है. आपको यूजुअली आपको रिकमेंड करते कि आप 11th साल से चालू कर दीजिए. मैंने ये अपने 11th में ही चालू कर दिया था, तो मुझे एडमिशन मिल गया था मेरे 11th के ग्रेड्स पे ही, क्योंकि मेरे अच्छे थे. और बाकी आपको आइल्स भी नहीं देनी पड़ती. दैट्स अ बिग एडवांटेज, बट इट इज रिकमेंडेड. आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड. मुझे खुद आइल्स दी थी एंड इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट. मैंने 1 महीने में क्रैक कर दिया था. सो इट वाज नॉट प्रॉब्लम. तो अभी आप स्टूडेंट को लिए जर्मन में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है? इट्स कंप्लीटली इन इंग्लिश, एंड इसीलिए मैंने अच्छा। चूज किया है ये. तो इसके आगे प्रोसीजर क्या है आपका कि मतलब आप एग्ज़ाम दे के जैसे स्टूडेंट के लिए का एग्ज़ाम दिया तो आप एलिजिबल हो जाते हो? Yes, it's a direct transfer into Frankfurt School. आप कोई भी यूनिवर्सिटी के एलिजिबल हो जाते हो, प्रोवाइडेड वो यूनिवर्सिटी आपका स्टूडेंट को रिकग्नाइज करती है, बिकॉज आप जर्मन में नहीं पढ़ रहे. सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कोर्सेज इन जर्मन. हाउएवर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज के लिए यू कैन अप्लाई. Again, I'm not pretty much sure. I can only tell you for Frankfurt School, it's a direct transfer, but it is a mandatory requirement to get a German grade above 3 in all subjects, or else you don't pass. भी ये मेरे को जानना था कि अभी आपका खर्चा कितना हो रहा है स्टूडेंट को का और साथ में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग? So this was the first annual program of Frankfurt School for student colleague. So it was 11,000 euros just the tuition fee the whole year. However, it is going to increase the next year. Sub Germany in short महंगा हो रहा है. So that is one thing that one has to keep in mind. I came 6 months ago. Everything is becoming more expensive, so it is going to happen. And then blocked account say monthly I get my expenses and a few hundred euros more than that, because at the end of the day you have to understand that you live in Frankfurt and the expenses are definitely going to be more than what you imagine. 861 euros mein you will be able to cover your fixed costs. Let's say my laundry, my phone bill, my rent, my insurances, because mind you, in student colleague the first year is private health insurance. Okay. You are not eligible for a public health insurance. It's only after you come to bachelor's. So that is something that one has to keep in mind when everything is communicated to you. It's not that you're kept in the dark. आपको नहीं बताते हैं. It's very cooperative. They answer well. So वो, and then a few hundred euros here and there, because let's say आप घर पे भी खाना बनाओगे तो ग्रोसरी तो लेने जाओगे ही. So it is not cheap. Anything is not cheap here. So Yeah, and I think transportation is free also, right? no, transportation is included in the tuition fees. So you have to pay 200 euros a semester for 6 months. And as Frankfurt standards, imagine it's very affordable. Yes. Because one ride costs you 2 euros. So even if I go there, it will cost me double, triple the price. So it's a subsidized rate for us.
हर एक स्टूडेंट का ये बेनिफिट होता है। ये आपको बहुत जगह स्टूडेंट डिस्काउंट मिलेगा। आपको क्लब्स बोलो, इफ यू लाइक टू पार्टी, इफ यू लाइक टू गो स्विमिंग, इफ यू लाइक टू गो टू प्लेसेस, यू ऑलवेज हैव स्टूडेंट डिस्काउंट, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर नो फ्री लंचेस एज दे से, सो इन एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट। एंड इसके बाद जैसे आपका बैचलर्स का भी कितना खर्चा को देना पड़ेगा? So bachelor's में the next coming year, winter semester, the fees is at 7,700 euros per semester. It is expensive, but you go to any other business school in Europe, I wouldn't even count the Americas or Canada, but the Europe, it's still more and more affordable at the quality of education you're getting and the type of people you get to. So it's 7,700 euros a semester. तो मतलब इतना ज़्यादा खर्चा है, बट आपने जर्मनी ही क्यों चूज़ किया फिर? But then I would like to, it's a two-part answer. So first is that I wanted to get an experience of Europe. You get to travel a lot. You get to meet people from all walks of life. Germany, in true sense, is diverse, especially Frankfurt. When you are in Frankfurt, you meet people from all walks of life. आपको कोई यूक्रेनियन मिलेगा, तो कोई जर्मन जो दूसरी कंट्री में रहते आए हैं. मेरी स्कूल में, मेरी क्लास में कितने अलग नेशनलिटीज है. So the perspective was something that I came for. And second is the quality of education. It's still one of the highest standards. You are supposed it's a voluntary base of education, as I said. आपको कोई स्कूल फीड नहीं कराएगा इंडिया में कि आपको ये सबमिट करना है. आपको खुद सब करना है. And that responsibility is something that once you inculcate, आप छोटी उम्र से करोगे, so it is very beneficial for you. This was my reason for choosing Germany. एंड जैसे अपना अभी तो आप स्टूडेंट हो, तो आप ऐसा पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो क्या? Again, student colleague में you are not legally allowed to work during your class hours. That means कि जब भी आपकी classes चालू हैं, you can't work. However, there is there's a thing where you can work in your breaks. So you can take up any part-time jobs, but yeah, we are not allowed to work. And the thing is, right now in Germany, the student residency permit also taking a lot of time because of the lockdown and stuff like that. So that may also cause a lot of problems. So if you plan to come to Frankfurt School, come with that mindset that yes, I won't be able to work for a year, and plan your finances accordingly. If you come in thinking that I get to work and you don't get to work and you don't have the finances, then you are in trouble. I said it's expensive, but it's worth it. मैनेजमेंट कोर्सेज हैं या फिर बिजनेस फाइनेंस कोर्सेज हैं, इनमें आपको ट्यूशन फी देनी ही पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. Private business schools are always expensive, but the returns you get are incremental. मैंने कहा एक फायदा ये है कि आप फ्री में भी पढ़ोगे या पैसा दे के भी पढ़ोगे, इतना substantial difference नहीं आता है. What you pay for is access. Is the type of people you get access to. अभी हमारे स्कूल में एक accelerator है. It's a startup incubator. So any student who has a thing gets an entry to the accelerator. It's a program, but we definitely have access to those people. Fintiba, you might have heard about it. It's a Frankfurt School startup. The founder is an alumni of Frankfurt School. So we get to meet those people, and at the end of the day, maybe we don't regard it, but it makes a very big difference because once you get to learn from those people, you know how to implement it. And finance and Frankfurt School, it is like a name, you know. You any bank you go to, there are people who know Frankfurt School, so that makes a very, very huge difference. Personally speaking, it might not to some. For me, it did make a big difference. सो अभी जैसे अपना जो स्टेम फील्ड होती है उसमें तो लोगों का इंग्लिश में काम चल जाता है. Exactly. आपकी फील्ड में जर्मन इज रिक्वायर्ड? It is, let's say Germany is changing. वो requirement से essential हो गया है. Essential से it's an advantage बन जाएगा. But yes, you are living in a country जैसे इंडिया में you can work with English absolutely, but हिंदी आएगी तो the connect to people becomes much more easier. That is what I have understood in the 6 months. I did a little bit of German, but you learn more German in Germany in 1 month than you do entirely in your 6 months in India. That everybody in Germany would definitely agree because everything around you is it. But talking about your question, yes, it makes a big difference, especially for advisory roles, because आपको German client से majorly need to help them out. And एक language का यही problem होता है, एक advantage होता है कि आप उनके साथ connect कर सकते हो. English में formal हो जाता है. German में you know their problem, you use words, so it makes a very big difference. But I wouldn't entirely rule out the option कि German नहीं आती, ताकि बस इतना time if you're coming for student colleagues, so might as well learn the language. कि चलो कि मतलब अगर जर्मनी सोच रहे हो ना तो जर्मन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कर लो, थोड़ा सा A1 A2 तक करके आओ. ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें